कुछ समय में शुरू करेंगे हैं। कंप्लीट हो जाए मिस्टर गौतम दास जी से भी सीनियर एडवोकेट पुलिस वो एक से चालू हो स्टार्ट है। क्लिक कर देना जैसे इधर पास में इधर ही रखना। हाँ आवाज कैसे आती है बाहर का उस रूम में जो भी बैठे हैं उनको रिक्वेस्ट कर दो कि वो इधर ही आ जाए। अच्छी बात है क्या जितने खुश हैं उतने ही शानदार हैं जो हमारे पास हैं दो चार साल वही में तो फायदा होती है अरे मुझे तो ऑलरेडी बाकी सर्विस दो चार है ना वो जो दो चार है वो गजब
फ्रेश कर दो। पाँच बजे हो पाएगा सर? ये वो लेक्चर सीरीज चलती है ना यहाँ कंसल्टेंसी में, फिर उससे डेली कल का हो पाएगा पॉसिबल? ठीक कल पे करवा लीजिएगा उसमें लेक्चर सीरीज चलती है ना सर कंसल्टेंसी में, तो वही है। बोले हुए हैं कि वहाँ से कुछ आ रहा है? सर एक मैसेज है सचिन पुरी जी हाँ, का। पाँच क्या? So bar association has immediately called an immediate meeting on the issue of pecuniary jurisdiction which is getting down for district court. ओह, अच्छा वो इशू चल रहा है। 30 तारीख तक कोर्ट में उन लोगों को सबको रिप्लाई दें, तो इसमें सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी दे आर स्टार्टिंग मीटिंग एट 4:30। मिस्टर सचिन पुरी जी का मैसेज ये है कि माइट ही कैन कम अराउंड 5:15 5:20 अगर मीटिंग जल्दी खत्म हो जाती है, अदरवाइज इट विल बी। तो हमारे को एक ही चीज़ थोड़ा सा अनाउंस करना पड़ेगा, क्योंकि खुद ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बार, और फिर जो मीटिंग है वो भी कंसर्न करती है हाई कोर्ट को फॉर द कंप्लीट इंस्टीट्यूशन। तो ये इफ ही इज एबल टू कम ही विल, अदरवाइज अगर मीटिंग लंबी चली तो सर हम लोगों को उनके एब्सेंस में करना पड़ेगा। तो वी हैव टू अवेलेबल स्पीकर, वन इज गौतम दास, अगर आते हैं तो इमीडिएटली सर उस पर फिर बात कीजिए। नहीं, बाकी लोगों की आपके उधर से भी जो आ रहे थे सबको बोल दिया है, अब कौन कितनी जल्दी पहुंच जाए तो अच्छा है। बार बार सबको बोल के तो आते हैं सर, अच्छा। आ जाएंगे। जो ग्रुप के लोग हैं वो तो सब 4:20 4:30 पहुंच जाएंगे। नहीं, अभी कितना होगा? अभी फिर 4:15 4:15 होगा। आ जाओ आ जाओ। ये आप गौतम दास जी का पूछ लो। गौतम दास फोन किया था, वो फोन नहीं उठाया तो क्या करें? ओके, कैन यू मेक वन सिंपल सजेशन टुडे? जैसे पिछले दफे हमने इंटरेक्टिव किया और कई लोगों ने कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछे भी थे। व्हाई नॉट सम सेशन ऑफ क्वेश्चन आल्सो फ्रॉम जो भी लोग कुछ कहना चाहें, अगर वो भी कुछ कहना चाहते हैं तो हम उनको सेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। नहीं मैं ना एज ए स्पेशल इनवाइटेड, नथिंग प्रॉब्लम। नहीं वो कोई अलग सडन कोई विषय पर कह जाने के वो बात है। आप ये मैसेज से ही शुरू कर दो, व्हाटएवर द मैसेज यू आर सेंडिंग। हाँ, मैं मैसेज के बारे में पहले मैं अनाउंस कर दूंगा सर, लेट सम पीपल कम, तो फिर हम अनाउंस करें और उसका प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आई एम जस्ट आल्सो वेटिंग फॉर नंदिता जी की अगर ओपनिंग वो करती हैं तो।
सर 415 हो गए हैं, 420 या 425 पे शो कर देते हैं बट इवन इफ वी हैव टू स्पीकर्स तो आफ्टर दोस इनको अपने जयशंकर जी को भी कोई मीटिंग भी है अभी, सभी लोगों पे आगे आगे कोई काम भी आप कितने बजे वहाँ पे 5 बजे कम से पहले आपको फ्री करवा नहीं नहीं then 2-3 minutes then shall we wait for another minute or नहीं, shall we आप start? लोग आ जाए हितेशी जी, Please. आप आइए सिंपल आप I request to please see, please sit and also yes, ji and rest. Yeah, start. Shall we? Yes. Yes, please. Thank you. Well, thank you very much, and I welcome you all on our 14th lecture series with the title Criminal Appeal, Arguments in Criminal Appeal, which is the most important topic. Why? Because Delhi High Court is an appellate court. So one should understand how an appeal is filed, what is to argued in an appeal, and what important parts should be taken care by the respective counsels. But before that, it is important for me to tell the lecture series that we conduct every time, our Friday lecture group. And our Shant Verma ji, Mr. K.K. Singh, Nandita ji, who will be joining now, Mr. Nazimuddin, and me, Sudhir Kumar. So we always try to involve the concerned specialist speaker, the seniors advocate, who can give us the varied wisdom on specific topics. But apart from them, this is our very, we can say that an honest approach to meet all those advocates who are able to speak or able to say some good points, insights on those topics which are the part of today's program. So this is a wonderful thing that our organization is approaching all the people, especially from the consultations block, the advocates who are working hard, and sometimes even if they miss a point, they should understand, and every advocate should understand what need to be taken care in their mind and wisdom. Because without that, it is not easy to go and fight for an appeal. Now, before that, I welcome our two speakers, Ms. Hiteshi Kakar and Mr. Jaishankar. And I need to make one important announcement. Chief Speaker, Senior Advocate Mr. Sachin Puriji will not able to make, though he has promised that he might can come because there is a very important issue on pecuniary jurisdiction for which Delhi High Court Bar Association has convened an important meeting, as an urgent meeting. So our learned senior is there and attending because also the eminent Vice President of Delhi High Court Bar Association. So we'll be hoping that our senior advocate Mr. Sachin Puriji will be joining us. But before that, we have a necessary program that to be conducted right now in the timely manner. So here we are, and now I'm passing on Mr. K.K. Singh ji to please give some good introduction to our two eminent speaker over here. Thank you, K.K. sir. Thank you, सुधीर जी. आप सभी लोगों को बताते हुए मुझे बड़ा खुशी है कि हम आज 14 वर्ष आपके सामने प्रस्तुत की गई. इससे पहले भी हमारी जितनी भी लेक्चर सीरीज हुई हैं, जिसमें हम सभी 5 लोगों का जो ग्रुप है, उनका सभी लोगों ने अपनी अपना दायित्व बड़े अच्छे से निभाते हुए और लेक्चर सीरीज को सक्सेस किया है. इसके लिए मैं चाहूँगा सुधीर सर, हमारे वर्मा साहब का बड़ा योगदान है, और शिव जी का भी है, हमारी नंदिता जी हैं, वो भी हार्ड वर्कर हैं. उनके लिए भी एक बारी तालियों से उनका स्वागत करूं. और आज के बहुत ही अच्छे हमारे स्पीकर, हमारे अतिथिगण पधार चुके हैं. हमारे सीनियर जो सचिन पुरी साहब हैं, वो किसी मीटिंग में बिजी हैं, तो खेद है. मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी पधारें और अपने अच्छे शब्दों से आपको बताएंगे. और आज का जो सब्जेक्ट है वो क्रिमिनल, मैं समझता हूँ क्रिमिनल अपील बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी है. क्रिमिनल की जो प्रैक्टिस करते हैं या नहीं भी करते हैं, फिर भी लाइफ में कहीं ना कहीं
बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज की जो हितेश कटर जी हैं वो भी हमारे सामने हैं। मैं चाहूँगा इनका तालियों के साथ स्वागत करें। हृदय से मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। आई रिक्वेस्ट टू वर्मा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, बड़ा सभी लोगों को साथ में चलने वाले। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्दर प्रोसीडिंग स्टार्ट करें। वर्मा जी। धन्यवाद केके जी। Today we are on the 14th lecture of Delhi High Court Consultancy Room Lawyers. Indeed, within a short span of time, as I understand, Sachin Puri ji, Senior Advocate, the Vice President of the Bar, would be reaching, but because of certain last time difficulties, he is not in a position to come in time. In the meanwhile, I was also trying to get in touch with Mr. Gautam Das, Advocate on Record in Supreme Court. He is also seems to be having some little busy schedule. Otherwise, also we have got one of our two prominent young dynamic lawyers of our bar, Mr. Jayasankar ji. Is, I understand, would be somewhere around 15 years of standing. Hitesh Kakkar would be somewhere around 6-7 years of standing, and both of them are also having a good practice, both in criminal matters also. Today's topic, as all of us knows, that criminal appeal, the argument on the criminal appeals. As such, we have organized the program on criminal appeal only. Apart from that, how we will argue the cases in the criminal appeal, or how to start with our criminal appeal arguments, because whenever the criminal appeal is filed, sometimes it is in Delhi High Court we are talking about. Now we have also the criminal appeal in district courts wherein the penalty period is lesser, whereas in High Court, wherever there are certain matters which are being dealt before the district judge and the additional district judge, where the sentence is above 7 years or so, where the charges are being framed for those provisions, on those the criminal appeals are being filed before our Delhi High Court with the nomenclature CRLA. Most of the times when we file the criminal appeal, sometimes there are certain delays also. For that, the delay application is also filed along with the criminal appeal. And once the criminal appeal is filed, criminal appeal is an appeal of a right, as everybody understands. So normally what it happens is criminal appeal is admitted, and thereafter when the matter comes, it comes after say around 4, 5, 7 years, whatever the period as per the convenience of the registry of the High Court. So those matters get listed. When the matter gets listed before the court, what would be the kind of argument wherein as a appellant will be arguing, or when we are other side also, what would be our style? So now I will give the mic to one of our upcoming young lady, you can say that. You see, the nation wants the ladies to also come forward, and as we understand in Delhi, we have a good number of lady lawyers, and in a a systematic manner we also used to think about that to also call certain lady lawyers in our programs. Hiteshi has got I have seen her practice also. She is having a good practice. She has done the 5-year law course also from Delhi itself. So we will hear her on criminal appeal, how to argue a criminal appeal, or how to start, or from where to start. Let us understand Hiteshi Kakkar. Yes, louder होना चाहिए. A very good afternoon to all of you. I hope I am audible. Yes.
Yes. I feel very privileged sitting here and sharing my views on the topic criminal appeal. Thank you, Prashant sir, and the entire team for inviting me and having me here. So the topic today is criminal appeal in Delhi High Court. So the concept of appeal, as we talk, it has come from a, a thought that humans can do errors. So that is why even judges are humans. They can also do errors while passing the orders. So the provision of appeal has come into picture. The appeal occupies a very significant role in criminal jurisprudence because in appeal, a accused or the complainant, whoever files the appeal, gets a second chance. That means in appeal, the evidences which has already been appreciated, it gets reappreciated. So it strengthens the idea of having faith in the judiciary, a hope to the complainant or the accused. Today, when I talk about criminal appeal, it is a statutory remedy available against the conviction, acquittal, sentence, or inadequate compensation. The appellate powers the court has been very widely been written under the CRPC. Now, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Act 2023, where there are several sections on which how the appeal can be filed before the Delhi High Court, before the Sessions Court, anywhere. The sections has been laid down, the procedure has been laid down very widely, in which all the powers of the court, all the statutory remedies, what one can avail, has been written. Today, I will be focusing on how a criminal appeal has to be drafted or how an advocate should present their appeal before the Honorable Delhi High Court. So first thing first, before starting of appeal, drafting of an appeal, it is very important to everybody who is drafting an appeal, there is a presumption against you because there is an impugn order against you, against which you are going to file an appeal. So it is a big task because the judge has already passed in judgment and the Honorable Delhi High Court or the Sessions Court or the Appellate Court, whatever the court, there is a judgment, so they might have an inclination that the judgment is right. So here comes the advocate, the duty of the advocate, how to convince him, how to even make your appeal maintainable or admit your appeal. So for that, it is very important the facts, because the law is same for everybody. But in a criminal matter, the facts varies. So the narration of facts is the key role. So while narrating the facts, just keep one thing in mind, don't copy and paste from the FIR. Take the facts from the judgments, the impugned judgments. Merely pointing out finger in the impugned order that this is wrong, the learned trial court has not paid any heed to my arguments, this will not gonna help. You need to convince the court that how that case against you is made out. That then only your appeal will be admissible. So for that, keep in mind the narration of the facts. The narration of the facts, the grounds, everything has to be from the judgment, not from the FIR as it is. Otherwise, there will be no, the judge will be like, if there is a judgment, then why should I hear on the facts? What is the new in this appeal, right? So merely criticizing will not help, and while narrating the facts, it is the primary duty of the advocate to fit in the mind of the judge that two views are possible. Once the judge gets an idea that there is some other explanation or there is some other theory or the chain of events have been broken, then he will be inclined to even pay heed to your criminal appeal, right? And the second and the foremost point
is while hearing in an appeal, it is very important that an advocate should keep in mind whether the statutory requirements in the learned trial code has been met or not. By statutory requirements, I mean opinion of the doctor, whether it is signed, the medical, the NLC which has been conducted, how the evidence, the arrest, seizure memo, how these things have been made out, whether the chain has been broken or not. Everything as per the law, there are sections which determine how the evidence has to be procured, how the seizure memo has to be made. So all those compliances have been done or not, because for an accused, if I will talk on behalf of the accused, a single irregularity help him to come out of the case. So that change, that lacunas, that advocate has to find. After that, then comes the important part, the evidence. Because when the proceedings were pending before the learned trial court, he has seen all the evidences, all the witnesses, their posture, how they have been, how they have come to court, what they are deposing, how they are deposing. So he forms an opinion. But in a Delhi High Court or in an appellate court, what you have is only their the statements. You can't bring the witnesses, their posture, their conduct. The High Court will not go into that. So for an advocate, it is very important that you prepare the list of witnesses from P1 then to the defendant witnesses and prepare them in a chronological, in a order, in a tabular form, so that whenever a judge asks you something, you should be well prepared. And by doing that, you will be able to rule out the irrelevant witnesses. By the irrelevant witnesses, I mean that some witnesses are only being called, like whether the FIR was registered in the computer or not. So that witness will be irrelevant, because that is not disputed that there is a FIR. So it is very important that an advocate should be able to differentiate between the relevant witnesses and the irrelevant witnesses. And while arguing and while presenting the case, if you will keep on reading the testimonies, each and everything, then the High Court or the appellate court will not be interested. Because ultimately you are not having reappreciation of evidences, you will be having a retrial. So in a stage of appeal, retrial is not possible. So it is very important that only the relevancy of the witnesses, that has to be told to the judge as it is, what are the relevant parts, what they have stated. Then next, when I talk about criminal appeal, yes, focus on the witnesses you wish to explain to the judge. Don't focus on the irrelevant witnesses. Relevance is more important than the volume. So keep in mind, relevance is the key. Secondly, while talking about relevance, while you are on the opposite side, the opposite side, there may be possibilities that there are lacunas in your own testimonies. So how to fill that lacunas? It is important to support it with precedents or the judgments. Otherwise, you cannot bring the witness again and record their statements again. So the precedents or the judgments will help you to fill your own lacunas. After that, when everything is done, it is very important that an advocate should give some time to the judge to absorb the facts. It should not be that you are standing there and you are blabbering to the court, this is my fact. In your mind, you have a specific defense that may be possible, legal or not. It may not, it is not possible, it may be possible that it is not communicated to the judge. Or give some time, take your pauses, present your case, and after that then disclose your defense that this is the point I was trying to say and this is the chain of circumstances that can be formed, or
this view can be possible in my case. I will give you an example. When you go to a 5-star and you order a khichdi and they'll serve you in a very beautiful plate and everything, you will say, okay, I can pay 5,000 for that decoration part and the ambience. But if you go to a dhaba and they will give you the same khichdi, you will not even eat it. So this appeal, when you present it to the court, it is important that it should be presentable. The articulation of the facts, the appeal, everything has to be in such a way that a judge should be with you while you're arguing the appeal. Otherwise, if the judge loses the interest or the chain of circumstances is not formed, then there are higher chances that you will not succeed in the appeal. At the end, if I would like to say about appeal, it is the duty of an advocate or an art of presenting an appeal. It is the gap between the law and the fact. If an advocate proceeds in filling the gap, then you will succeed while preparing the appeal. So that was my part on regarding how the appeal is to be presented and how the drafting can be done. So there is another view which I would like to, since I have got the opportunity, while I was going through what I can say in criminal appeal, because see, we all are advocates. So I think this is the correct stage where I can share my opinion on that also. I was going through some articles and where they have talked about pendency of criminal appeal. In Delhi High Courts particularly, what happens is when an appeal is filed, so suspension of sentence is done, or the bail is done, or it will be kept in the regular list. Then it will take years and years that your matter will come on board. Because of that, what is happening is there are innocent people who are undergoing imprisonment, and there are people who are roaming freely. So the balance of convenience, when we talk about balance of convenience, balance of inconvenience, the administration of justice, all these things, it feels a vicious lie, or it's a trap, because the matters are so much and the judges are very less. So it is very ironical when I say that there is a specific limitation for filing of an appeal, but there is no limitation for the decision of the appeal. So this is very saddening on the part of us, even I will include us, because being an advocate, we also have a laid back attitude कि अच्छा suspension हो गया, अब आने दो regular में देखा जाए. So this is not a practice in Delhi High Court. I had a word in, even I have a matter in Chandigarh High Court. There is a stay in my matter, and it has been pending from past 5 years. And whenever I mention the matter before the bench, they say, "Madam, there is no urgency. You have a stay. You enjoy." So the person, if he has to travel abroad, he always has to take permissions. There is a matter in pending in Rouse Avenue Court. In that also, the FSL report is pending. It is going on, and they are giving date. Because of that, the person, if he wishes to go abroad, his entire family is in abroad and he is suffering here. Every time for 6 months, for 3 months, he is going to the court. Permission, please give me permission. So because of that, I think it is not only the judiciary, it is the duty of an advocate also, that whenever a matter comes, it should be drafted in such a way that the judge should also understand what we are trying to do and what is there in my appeal, how I have the grounds and everything is so well written. So it don't take much of the time, because appeal scope is very limited. Where we are not having a retrial, only appreciation whether what wrong has been committed in the impugnment. So as I sit here, I request all of you that if we can help our judiciary or do something, I don't know, we can help it or we can work together
to clear the pendencies or help those persons who have been timelessly suffering in jails waiting for their appeals to be listed. If that can be done, it will be a good effort. So that's all for now, and thank you so much for having me. Excellent. Literacy at such young age. If you are expecting her to argue at length in the criminal appeal, yes, she is in a position. She is proving herself. You see, our effort herein is also to see to it that the younger generation, which has got a zeal to work, pendency of the litigations in the courts, particularly in the criminal appeals. Sometimes you have got a very small point and that can be decided on the very face of it. We used to sometimes also argue before the court that my lord only the short point involved in this case is this much. So that is what she was trying to convey before us. And yes, there are certain criminal appeals also which is required to be heard at length, and appreciation of evidences she has also dealt with that. How your evidences which are against you or in favor of a party, how he has to place it before the court in a manner so that it also clicks to the mind of the honorable court and to decide it on the very threshold of it. So, with that, we will be hearing our second speaker of this afternoon, Mr. Jayasankar. He is also having a good practice in this particular field, the criminal practice. He will be also focusing what are the good grounds or what would be the points, how you can take the good grounds to the court. I do not know. Let us hear Mr. Jayasankar ji. Please. थैंक यू वर्मा जी, थैंक यू हमारी टीम के सभी मेंबर। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूँगा। ठीक है। हमारे सामने टॉपिक है आर्गूमेंट ऑन अपील बिफोर हाई कोर्ट। जनरली द अपील कम बिफोर हाई कोर्ट इन हीनियस क्राइम, जनरली हीनियस क्राइम अगेंस्ट द बॉडी, लाइक मर्डर, लाइक attempt to murder, so many heinous crimes are mentioned in the CRLA. How to argue on appeal? Because the appreciation of the evidence, as my sister earlier told about we cannot retrial before the appeal, we cannot appreciate it again the evidence, but only illegality and perversity in the judgment was laid down by the trial court, and we are coming before the high court. What can be legality, what can be perversity in the judgment? मान लीजिए उदाहरण के लिए गन शॉट से मर्डर हुआ है, circumstantial change already set up, prosecution witnesses relevancy already set up, that's why the accused has been convicted, we are standing before the accused before the high court. अब मर्डर का offense अगर हुआ है तो offense is not against the individual, this is against the society. Before the appellate court always see the balance, convenience of balance, as my sister told before in the lecture, balance of the convenience of the rights of the convicted of the society. मान लीजिए अपील 15 साल से पेंडिंग है, the issue is delaying to hearing the matter, disposal of matter. अब वो कैसे, एक्यूज जिसने मर्डर किया था उस समय उसकी एज थी 22 साल, आज पेंडिंग हो गई 18 साल, तो उसकी एज हो गई 40 साल। कोर्ट आल्सो सी वन पर्सन इफ रिलीज इन द अपील कैन आल्सो कमिट अगेंस्ट सच ऑफेंस। इस तरह के भी सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं। अगर वैसे ही उसके पास कैपेसिटी, समटाइम वन पर्सन हैज कमिटेड वेरियस मर्डर बट ही हैज एज अबाउट 90 ईयर, then also appellate court released to him without any arguing, without any showing the illegality पर, क्योंकि 90 साल के व्यक्ति आकर के कौन सा मर्डर करेगा, उसके पास खुद ऐसी फिजिकल कैपेसिटी नहीं है। हेनियस ऑफेंस में हम क्या शो कर सकते हैं? सबसे पहले इंसिडेंट्स, इनकंसिस्टेंसी ऑफ द इंसिडेंट। मान लीजिए इंसिडेंट हुआ, डिलेइंग ऑफ एफआईआर मे बी वन ग्राउंड बट नॉट एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस। अगर आफ्टर थॉट आ गया उसमें डिलेइंग, मान लीजिए मर्डर होता है 1 तारीख को, एफआईआर हम दर्ज करा रहे हैं 2 तारीख को, देयर इज इलीगलिटी बिकॉज़ a proper explanation should be come in the judgment.
अगर नहीं आती है ऑन साइड ऑफ द प्रोसिक्यूशन देन ए ग्राउंड टू अलाउ माय अपील, फर्स्ट ग्राउंड डिले में एफआईआर। सेकंड इज इनकंसिस्टेंसी, मान लीजिए 5 बुलेट लगी हैं, गलती से 4 बुलेट की रिकवरी हुई है, 4 ही शॉट आए हैं, तो एक कहाँ है, तो उसको देयर शुड बी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड सेट अप द सर्कमस्टेंशियल चेंज, प्रूव द प्रोसिक्यूशन केस। तो मर्डर में आपको ये देखना है कि एविडेंसेस कैसे मेडिकल के हैं, डिले के हैं, और जो विक्टिम है, क्योंकि एक तो विक्टिम मर ही गया है, वो तो कोई है ही नहीं, और उसमें जो वर्जन है वो कहीं कंट्रडिक्शन तो नहीं हो रहा है। तो अब इन सब का बेनिफिट गोज टू द एक्यूज, ऑब्वियसली कन्विक्टेड गोज टू द कन्विक्टेड। एक थ्योरी है एविडेंस में, लाइट सीन टुगेदर, 2 मित्र जा रहे हैं, तीसरा कोई है ही नहीं। अब किसी ने उन्हें 5 घंटे पहले देखा था पुल पर कि भाई वो जा रहे हैं या किसी गाड़ी से जा रहे हैं, उसमें एक का मर्डर हो जाता है, तो ऑनर्स ऑफ द जाता है कि भाई इसने ही किया होगा मर्डर, उसको 302 में कन्विक्टेड कर दिया जाता है। हम आते हैं, हम ये भी ग्राउंड ले सकते हैं देयर वाज ए लास्ट सीन टुगेदर। अब यहाँ थोड़ा सा क्या है, जब भी हम आर्गुमेंट कर रहे हैं तो हमें दिखाना 4 घंटे पहले आप देख रहे हैं लास्ट सीन टुगेदर, बट लास्ट सीन तो थे जब घटना हुई, हम टुगेदर थे ही नहीं, तो देयर इज ए लास्ट सीन 4 आवर बिफोर, बट जब इंसिडेंट हुई वहां तो हम थे ही नहीं, टुगेदर तो थे ही नहीं, तो देयर कैन नॉट बी कन्विक्शन ऑन दैट ग्राउंड, समवन हैज लास्ट सीन टुगेदर टू मी विद द डिजीज्ड पर्सन, तो आई कैन नॉट बी कन्विक्टेड। तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन शुड बी कम। अब वहां रिकवरी कुछ नहीं होती, रिकवरी वाला पॉइंट भी जैसे हीनियस ऑफेंस है, मर्डर का या कोई वैसा है, तो उसमें रिकवरी भी बड़ी मायने रखती है कि रिकवरी पॉइंट है, मान लीजिए रिकवरी हो रही 4 दिन बाद, या एक्यूज ने जो स्पेसिफिक बताई जो कंट्रडिक्शन स्टेटमेंट दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड, बट द रिकवरी पॉइंट कैन बी रिलेवेंट। अब रिकवरी हो गई, एक में अभी तो जजमेंट कोई कुटिया बाबा जी थे, कर दिया, दारू पी के आता था, इनके पास आता था, वो सालों से बैठा था, उसी ने मर्डर किया। अभी किसने देखा कि हम नहीं देखा, क्या रिकवरी किसने कराई, क्या मैंने करवाई, क्योंकि उसने फेंका। तो रिकवरी हियर नॉट रिकवर्ड द weapon by the accused statement, here the recovered weapon by the prosecution who are stating or dictating the FIR. So this is also can help the convicted to doubt, there is a create a doubt in the story of the prosecution, the benefit goes to the। अब शिष्य है, आपने देखा, आपने मारते हुए देखा, आपने हथियार फेंकते हुए, तो आपने बताया सबसे पहले किसको, आप थाने पहुंच गए, पड़ोसियों को बताया, आसपास जो भी है उनको नहीं बताया। इट मींस देयर इज डाउट कि मे बी दैट पर्सन कन्विक्टेड, इसने किसी को फंसा दिया। तो ऐसी जो हीनियस ऑफेंस में होते हैं, आर्गुमेंट ऑन द अपील। अब हमारे सामने एक केस आया, उसमें ये था कि किसी को आग जलानी घटना होती है मेडिकल वुमेन के साथ, कि जलाया, फिर वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, भर्ती 4 महीने रहे, फिर वो अपने मैरिटल पेरेंटल होम गई, वहां उसने जाकर के दम तोड़ लिया। अब कैन बी सस्टेन्ड कन्विक्शन ऑन 302 और कैन बी कन्विक्शन 498 जो भी सो कॉल्ड वो 304 बी बनाते हैं, ये हो सकती है। अब वो हमारा वर्जन ये है डिफेंस में कि भाई जब आग लगी, इमीडिएट कौन जिस पर एलिगेशन थे वो एक्यूज पर्सन थे, उन्होंने एडमिट करवाया, जब भर्ती हो गए, ठीक हो गए 1 महीने में, फिर वो अपने पेरेंटल होम गई, वहाँ 4 महीने रही, फिर वो किसी मे बी अमाउंट सम और डिजीज, तो उससे उसकी डेथ हो गई है, तो कैन बी कन्विक्शन अंडर 302 नो। तो मे बी सम ग्राउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मेरी बहन ने बताया कि हमें देखना पड़ेगा एविडेंस में कंट्रडिक्शन कहाँ है, वी कैन नॉट अप्रिशिएट द एविडेंस, कंट्रडिक्शन कहाँ है वो हेल्प करेंगे, प्रोसिक्यूशन की सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन कहाँ टूट सकती है वो हेल्प करेंगे, और जो हमारा डिफेंस है वो हमें हेल्प करता है। अब जैसे बहुत अच्छा डिफेंस होता है प्ली ऑफ अलीबाई। अब मान लीजिए घटना हमने की है, किसी व्यक्ति ने की है लाजपत नगर में, अब वो कह रहा है कि उस समय तो मैं निर्माण विहार में था, अब उसकी दूरी कितनी, घटना हुई है मान ली निर्माण विहार, जो वो बता रहा है 3:30 में थे, घटना हुई है 3 बजे, क्या आधा घंटे में पॉसिबल वहाँ पहुँच सकते हैं? इसमें दूरनाथ पांडे का बड़ा फेमस केस है, तो ये इलाहाबाद की घटना है, हाथी पार्क के पास में, कि उसने गोली मार दी थी, और वो कह रहा कि मैं नैनी में था, वहाँ से करीब है शायद 20 किलोमीटर, तो उन्होंने कहा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि भाई 20 मिनट में आप 20 किलोमीटर जा सकते हैं, दैट कैन नॉट बी, आपके पास स्कूटर है और ये घटना 1978 की है, तो उस समय रोड भी खाली रहते थे, आप पहुँच सकते हैं
तो इसमें लाइबिलिटी है। तो प्ली अलेबाई भी बहुत अच्छा ग्राउंड हो सकता है हमारे डिफेंस के लिए, अगर हम कन्विक्शन के कन्विक्टेड के बिहाफ पर हैं। सरकमटेंशियल चेंज भी तो हम क्या है लास्ट इन टुगेदर की थ्योरी ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा फाल्सली इम्प्लीकेटेड इन क्रिमिनल केस में बहुत से लोग कहते हैं भाई इनके भी नाम डलवा दो, होता है कि भाई 4 लोग इलेक्टेड थे, एक है ही नहीं, उसका भी डलवा दिए, वो बेचारा सफ़र कर रहा है। तो वो कहता है, जैसे हमारे पास एक केस आया है हीनियस ऑफेंस में, आज रेप भी आ रहा है कि हम जीजा थे, हम घर पर गए थे और हमारा नाम डलवा दिया कि ये भी साथ में थे। अब कैन भी कन्विक्टेड अंडर 376, अब जीजा के ऊपर लग गया है, हस्बैंड के ऊपर लाई नहीं, जीजा के ऊपर लगा दिया है। तो अब उसने बताया कि जिस गाड़ी से आए थे वो गाड़ी एक्चुअल में 21 तारीख को आए थे और 22 तारीख को आरटीओ की पर्ची है कि 22 तारीख को ये इन्होंने खरीदी है। तो जैसे ये वैलिड पॉइंट, हमें हर चीज देखनी पड़ेगी एस्पेक्ट में कि जितने भी इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, इवन एफआईआर में क्या डेट है, कितने टाइम की इंसिडेंट है, क्या इंसिडेंट रिपोर्ट की गई है, कब 164 हुआ है, उनमें कंट्रडिक्शन, वी कैन ओनली रेज द कंट्रडिक्शन, नॉट अप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस कि ये कंट्रडिक्शन है इनके और क्यों है, उस पर हमारी एक्सप्लेनेशन क्या है। इसके बाद में जो मेडिकल है, मेडिकल का बहुत बड़ा पॉइंट होता है, मेडिकल में हमें क्या सपोर्ट मिल सकता है। फिर 313 हमने किस तरह से अपना दिया है, हमारा रिलेशन क्या है, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली हीनियस ऑफेंस रिलेशन में होते हैं, किसी की इम्यूनिटी है या कोई किसी का दुश्मन है, वो ज़्यादातर कैसे कैसे होते हैं, तो वो दिखाना पड़ता है। अगर प्रीवियस कोई केस चल रहा है उसका भी बेनिफिट मिले, उस पर एक्विटल होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नीचे सेशन कोर्ट भी अपहेल्ड कर देता है कन्विक्शन लाइफ टू डेथ, और उसके बाद में लाइफ टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ हाई कोर्ट भी कर देता है। सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से पूरी तरह एक्विटल करता है कि गलत कन्विक्शन हुई है, गलत वो चीज़। तो मेरी यही सबमिशन है, जो भी छोटे से आलोक में है। हमारी बहन ने पूरा स्ट्रक्चर जो भी फाउंडेशन था बताया, कैसे अपील आती है, कैसे हमें ड्राफ्ट करना है, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। तो हमारा तो यही था कि कैसे हम बेनिफिट ले सकते हैं आर्गूमेंट में कंट्रीब्यूशन, एक चार्ट बनाकर, जैसे छोटी बहन ने बताया कि चार्ट बना सकते हैं, एक इंसिडेंट का बना सकते हैं, डेट का बना सकते हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूशन, तो वो हेल्प करेगा, हमें वो लेंदी नहीं जाना होता है। और जब अपील आती है तो अपने जो भी कंट्रडिक्शन पॉइंट है कोर्ट उसका अप्रिशिएट करके आपको बेनिफिट दे देता है और उससे आप अपने एक्यूट को बचा सकते हैं। बाकी प्रोसीजर पार्ट है कि अपील आप लगा रहे हैं कि कन्विंस सेंटेंस ऑफ सस्पेंड ऑफ सेंटेंस करवा लें, बेल करवा लें, तो एक पार्ट वो है। बाकी मैन है कि वो अपने केस से कैसे बरी हो, इस पर सारी चीज़ें, अगर मान लो कन्विक्शन ही हो रही है तो कैसे सेंटेंस कम हो, इस पर हम कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। वर्मा जी से रिक्वेस्ट करूँगा। बहुत अच्छे बोले हमारे जयशंकर भाई ने, और इसके साथ आपने जो बड़े अपराध और अपराधी इन्हीं लोगों के विषय पे बात रखे, एक साधारण तौर पर कैसे लोग समस्या के साथ जूझते हैं, क्रिमिनल अपील कैसे जल्दी में भी निपटारा किया जा सकता है, साधारण व्यक्ति को जो समस्या रहती है, मेरे ऊपर एक कन्विक्शन की सर पे बोझ खड़ा है और उस बोझ को भी कई बार लोग चाहते हुए भी लगता है कि उनका क्रिमिनल अपील की सुनवाई इतना लंबा होता है ताकि उसको वो भी मिलना मुश्किल होता है। कई बार तो ऐसे होता है अपराधी की सर पे वो लगा हुआ है और वो आदमी भी गुजर जाता है। ये बड़े समस्या वाली बात है। साथ साथ आजकल हम लोग जैसे देख रहे होंगे कि एक जो राजनीतिक नेतृत्व के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कभी यदि आप सोचेंगे, जो नेतृत्व जो है कभी 2 बार 3 बार 4 बार इलेक्शन में जीता हुआ है, जनप्रतिनिधि है, उसके ऊपर भी कई ऐसे संज्ञान जुर्म के बारे में लाया जाता है। कभी ऐसे होता है कि करप्शन में भी उनको डाला जाता है, तो उस करप्शन में उनका 3 साल 4 साल ऐसे सजा भी हो जाता है। उसके बाद उनको बोला जाता है गुलाया आप चुनाव में लड़ नहीं सकते। उस आदमी के जनप्रतिनिधि था और उस आदमी को ऐसे चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में एक पूरा उसको क्या होता है कि जैसे हम क्रिमिनल अपील फाइल करते हैं, हमारी अभी पहले भी आप लोग बात कर रहे थे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, क्योंकि पहले दिन पे जब आपकी क्रिमिनल अपील सुनवाई होती है तो आपके ऊपर जो सजा लगी है
उस सजा को सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक ये क्रिमिनल अपील सुनवाई ना जाए। क्रिमिनल अपील में सस्पेंशन लगाने से आप चुनाव नहीं लड़ सकते। उस समय आपको आता है सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन की। यदि आपके ऊपर सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन है तभी आप चुनाव लड़ सकते हो। ये एक अलग विषय था, क्योंकि ये मुझे लगा कि ये भी एक विषय भी हमारे इस विषय में चर्चा होना चाहिए। जैसे कि हितेशी जी ने भी बोल रहे थे कि कोई भी व्यक्ति को बाहर जाना है, उसको पता है मेरा सा जो जरा सा मेरे खिलाफ में जो अपराध की जो जुर्म लगे या जिस विषय के ऊपर निचला अदालत जो है उसके ऊपर सजा सुनाई है, इसको यदि सही में सुन लिया जाए तो उसको बरी हो जाए, ताकि वो जाके बाहर हमने काम कर सके। ये भी विषय भी एक रहता है। मगर साथ साथ आप यदि सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन के ऊपर यदि आप देखोगे, वो एक जजमेंट आया था नरसिम्हा राव वाला जजमेंट, आप लोग सब ने पढ़ लोगे। उस नरसिम्हा राव वाला जजमेंट में आपको मिलेगा कि कब आपकी सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन हो सकता है और सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन कहाँ नहीं हो सकता। वैसे तो जो नेता जो है उन्होंने करप्शन किए, सारी चीज उनके खिलाफ में है। अब वो चाहते हैं कि जी नहीं मेरे 2 दिन में भी सुनवाई हो जाए, और 2 दिन में सुनवाई होगा तो उसमें जज साहब को लगता है कि अरे इसमें तो इतने सारी चीजें देखना पड़ेगा, मुझे तो जब सुनूंगा तभी आपकी सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन होगा। क्योंकि सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन का मतलब एक तरीके से उसको पूरा क्लीन चिट दिया गया कि भाई आपके ऊपर कोई और नहीं बनता है। अब क्लीन चिट कोई न्यायाधीश महोदय क्यों देंगे? तो ये वाली कई सारे विषय है। हम लोग जब ये न्यायालय के समक्ष क्रिमिनल अपील में आते हैं, ये सब चीजों के ऊपर ध्यान करना भी जरूरत है। जैसे कि अभी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बताया, ऐसे अन्य भी कई सारे ऐसे बड़े बड़े अपराध भी है जहाँ पे 10 साल 5 साल 7 साल ऐसे की सजा होती है, वो सारे क्रिमिनल अपील के दायरे में आते हैं। और उन्हीं सब विषय के ऊपर जब आप अपनी पहले पिटीशन की तैयारी करते हो, जो ग्राउंड्स ऑफ अपील लिखते हो, ग्राउंड्स ऑफ अपील लिखने के समय पे हमें कम से कम ये देखना चाहिए जो निचला अदालत की जो आदेश आया है उसमें से कौन सी विषय जो एविडेंस के विपरीत है, जिससे हम एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस की भी बारे में बात करते हैं। जबकि एक एप्रिसिएशन कैसे कैसे चीजों के किया जाना चाहिए, वो भी एक आपकी क्रिमिनल अपील की एक दायरा होता है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मुझे लगता है अभी अपने सुधीर जी हो सकता है वेट कर रहे होंगे जी आएंगे करके, गौतम जी और सचिन जी, अब कुछ समय भी हो गया, आप ही निर्णय ले सकते हो कि आज का कार्यक्रम हम यही करेंगे और जो भी कुछ है आप अपनी बात रखेंगे। सुधीर जी से मैं अनुरोध करूंगा, बाद में मैडम भी तो वोट ऑफ थैंक्स। हाँ, मैडम से आज हम वोट ऑफ थैंक्स करवाएंगे, बट बिफोर दैट थैंक यू वेरी मच। आई आल्सो पर्सनली स्टेट हितेशी एंड जयशंकर साहब हैज सेड समथिंग रियल गुड इनसाइट्स। हितेशी की एक बात में बहुत अच्छी बात लगी कि कौन सा एविडेंस नेसेसरी है रीअप्लेस करने की, एंड जयशंकर साहब हैज गिवन अ कंप्लीट chronology what kind of issue should be there. But first understand, when we say criminal appeal, arguments in criminal appeal, so that means when we file our appeal, then our synopsis has to be that legal principle why this appeal should be admitted. And if there is a conviction, we are going against a conviction. Conviction should be stayed till the finalization of this appeal. And on the same day of that representation of appeal, the Honorable Court passed orders and put some conditions. So this is the most important part. Because after that, the cycle of argument starts. If it is, we are coming against acquittal, like if the state can come, then what will the procedure? And if a private person who has been affected and has taken a permission from the prosecution that he wanted to file an appeal against this particular acquittal, then how that conviction should be maintained or supported. So that means we are speaking about procedural irregularity of sentencing. That is one aspect of argument of criminal appeal. Most important, what kind of sentences on which we come for a criminal appeal? So sentence or conviction which is less than 3 years, so that we can get a benefit of section 389 clause 3 CRPC vis-a-vis 430 of BNSS on the same time.
and that has to be done by filing a advocate bail bond. Without that, you cannot go for your appeal. Then after filing the appeal, what if the sentence is more than 3 years? So definitely the person will be taken into custody. Then we have to file his criminal appeal and ask for what suspension of his sentence, and he should be given an appropriate bail. Then what kind of bail? So all these procedures marks for one thing, which comes in one chronology, and that chronology is misrepresentations of facts. Material misrepresentation. For in material misrepresentation, we can say about evidences, we can say about testimonies, we can say about forensic reports, the police FIRs, everything. So those material misrepresentation is actually your argument. Without that material misrepresentation, nothing can rely. To immediately make an impact on an appeal, what is required? To immediately maintain an impact, then we have to say that the conviction is based on irregularity. So when we say what is irregularity, was there any misrepresentation of facts, laws or principles? So then we immediately should come to the perversity in judgments. What is perversity then? So that means whatever the evidence is, the defense from the accused side has stated there are not taken on record or are not given a place in the judgments and are not appreciated proportionately, one immediately should go for it. Otherwise, all of our arguments will come on a standstill because it will become a generalized arguments. Save yourself from the generalized arguments, because for that means you always have to read that charge sheet or that 313 statement, even statement of 245 or the 164, to see what actually was there which was not taken in the judgment, because we are saying that the judgment of conviction, or there is an acquittal from the other side. So these are the points for the arguments, because whatever we say, it says about irregularity of our procedures, facts, circumstances. What kind of appeal has to be laid over there? If anything is coming by the way of 389 clause C, that means after trial, appeal has to be before sessions. Or if there is a sentence of sessions, then appeal has to be at High Court. We cannot jump to Supreme Court immediately. And we should refrain ourselves from doing such kind of practice, that we should go within hierarchy of the law. The court hierarchy is very important. The order of JMFC has to be assailed before sessions. And after the order of any kind of order, judgment, by the sessions, criminal revision petition to High Court? Or do you feel that there is a second appeal to that? One has to read that law also. So, the argument always has to be with the legal wisdom, good judgments, and the ability of an advocate to see what perversity was remained there. So this is how our arguments in criminal appeal should be done, whether it is a sessions court or High Court. Please understand that the way you represent, the way it will be reflected in the judgment. Ability of advocate, केस को कभी भी अप या डाउन कर सकता है, यही होती है ताकत एडवोकेट की. एंड अपील की बात को समझिए. अपील मीन्स वी हैव somebody's life in our hand. So advocate has to be very strong in their law, principles of law, and fundamental law of appeal. Please understand that. What kind of section is involved? 372, 374, 378. हम किस तरह की अपील की बात कर रहे हैं, और मुझे क्या आर्गुमेंट चाहिए 372 में, वो थोड़े डिफर होनी चाहिए आपके 374 के पार्ट से. आप एक ही तरह का आर्गुमेंट हर अपील में नहीं इंप्लाई कर सकते. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. दिस इज व्हाट द बेसिक रॉन्गनेस ऑफ वेरियस एडवोकेट्स आर. वो एक ही तरह के आर्गुमेंट्स को हर जगह डाल देते हैं. नहीं. दैट मीन्स यू हैव नॉट रेड योर फाइल.
But anyhow, this topic can go as much long as we want, and I feel that our learned senior is still in the meeting, and Mr. Gautam Das is might be busy in some other cases. Since Nandita is not here, she has gone for some other work. I thank you all on behalf of this organization, which is very much led by our Prashant Verma ji, Mr. K.K. Singh is here, Nandita, Mr. Nazim. Thank you very much all. You have taken such kind of time to listen to us. Your insights are also invited every time, whatever you feel. And please do understand, whatever this program is made over here, this is also aired online on Facebook and other social media, and we have very much good appreciation from the society. So please, I again thank you all, and I now invite you for some little bit of tea and refreshment. Thank you very much. Thank you. Before that, we can have a group photograph also. Sir, I am having a doubt. Like in CPC, we have a provision of Order 41 Rule 27 that states that we can go for evidence in the appellate side as well. So, are there any is there any provision in CRPC? No, No, no. there is no such provision which say again to go for evidence. Even if you feel that any kind of evidence was remained, then there is another provision to whether you can go for that kind of trial again. There's very one good movie that came, Bheem, जो एक South Indian जज साहब के ऊपर थी. There, the evidence was started at High Court itself, and that was the procedure of habeas corpus. Please understand that. The procedure of making evidence in CPC is almost like we are taking two kind of bridges. But एक bridge heavy traffic के लिए है और एक light. So evidence has to be every time be well appreciated. But the question was yours that whether it can be go for criminal side. Answer is no. It is not in our law actually, because whatever the evidence is there, trial courts are there every time to appreciate. But it is the power of court also. If your appeal says that this evidence was never taken, that's why I use the word perversity. So whether that perversity can make such kind of taking that evidence again, answer is no. You can